Hi there guys, how are you? Now in this video we'll discuss some MCQ type questions. Now UGC नेट का एग्जाम जो है री-एग्जाम जो है होने वाला है. So before that make sure that you are prepared and the best way to test yourself and your knowledge is by solving MCQs. तो इस वीडियो में हम लोग MCQs करेंगे लिटरेरी स्कूल्स पर, ठीक है? द मेजर लिटरेरी स्कूल्स इन इंग्लिश लिटरेचर. नाउ स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं then you can follow me on Telegram, ठीक है? And this is the official link, Harsh Singh Sir Official. And this is a brief about me. Let me tell you that I have done my masters from Delhi University, Hansraj College. If you want, you can read here, ठीक है? And before I begin, one small announcement. If you are preparing for MA English Entrance 2025, then for new batches, just WhatsApp us on this number 7678160296. And if you're preparing for UGC NET for December batch, we are starting a new batch from the 15th of July. तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इस नंबर पर, ठीक है? तो दोस्तों शुरू करते हैं. This is the first question. During the modernist period, a group of writers and artists emerged who embraced a philosophy of art for art's sake and rejected the didacticism of Victorian literature. They were known for their bohemian lifestyle, ठीक है? Bohemian lifestyles, progressive views on sexuality, and exploration of unconventional themes in their art and writing, ठीक है? Which literary group is being described here, ठीक है? So इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. So यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि which writer was a member of this group, ये कह रहा है कि which literary group fits well in this description. Options are Bloomsbury Group, Georgian Poets, C. Aesthetes, and D. The Imagists. Now the correct answer is the Bloomsbury Group. ठीक है? See, while the Aesthetes also valued art for art's sake, they were less known for their bohemian lifestyles and progressive views compared to the Bloomsbury Group. ठीक है? यहाँ पे आप देखो कि they were also known for their bohemian lifestyle. ठीक है? Believed in art for art's sake, progressive views on sexuality. ठीक है? Aesthetes as compared to the Bloomsbury Group. ठीक है? The additional details in the question more accurately describe the Bloomsbury Group's characteristics. ठीक है? So correct answer is A, the Bloomsbury Group. Now अगला question है the romantic period in British literature is often associated with which of the following characteristics? A, industrialization and social reform, individualism, emotion and nature, C, skepticism and intellectualism, D, religious revival and moral didacticism. इनमें से कौन सा होगा? सोच के बताओ. See, correct answer is B, individualism, emotion and nature. ठीक है? अगर आपको याद होगा romantic period, we had writers like Wordsworth, Coleridge, Byron, Keats. ठीक है? उसके बाद question number 3, which literary movement challenged traditional narrative structures and explored the subjective experience of characters? ठीक है? ये तो काफी आसान सा है. A, realism, B, naturalism, C, modernism and D, postmodernism. See, आपको आंसर तो पता ही होगा. The answer is modernism. This movement emerged in the early 20th century, experimenting with form, perspective to reflect a fragmented world. Now, अगर आपको याद होगा, the writings of Virginia Woolf, James Joyce, ठीक है? Their writings are good examples. Now, after that, Victorian literature is known for its focus on which of the following themes? ठीक है? A, medieval romance and chivalry. B, social issues, morality and progress. D, the absurd and the meaninglessness of life, and D, the subconscious and dream symbolism. ठीक है? Now है तो बहुत ही आसान सा, ठीक है? Victorian literature, we all know Charles Dickens, George Eliot. The answer is B, the social issues, morality and progress. ठीक है? Victorian writers often address the problems of their rapidly changing society. Now next question is, which literary school is characterized by dark humor, irony and a rejection of grand narratives? ठीक है? Now ये बहुत ही important statement है, rejection of grand narratives. अगर आपने पढ़ा है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा. A, postmodernism, B, romanticism, C, realism and D, victorianism. What is the correct answer? बस इससे ही आप जज कर सकते हो. The correct answer is postmodernism. ठीक है? This movement arose in the mid 20th century, questioning traditional assumptions about truth and meaning. ठीक है? और एक और चीज पूछता हूं मैं, हु सेड दिस? इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स और ग्रैंड नैरेटिव्स. ये एक क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए, ठीक है? इफ यू नो द आंसर. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट phrase that is there in postmodernism. ठीक है? After that, the next question is, the metaphysical poets of the 17th century are known for their use of which of the following literary devices? ठीक है? Metaphysical poets, ठीक है? John Donne वाला. A, alliteration and assonance. B, conceits and paradoxes. C, free verse and stream of consciousness. And D, blank verse and iambic pentameter. इनमें से कौन सा होगा?
सोचो, क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सी द करेक्ट आंसर इज बी, कंसीट्स एंड पैराडॉक्सेस। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स एम्प्लॉयड कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स एंड सरप्राइजिंग कंपैरिजंस टू एक्सप्लोर इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल थीम्स। ठीक है, नाउ इफ यू हैव रेड द पोएम्स ऑफ जॉन डन, आपको पता होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिटरेरी मूवमेंट सॉट टू डिपिक्ट लाइफ एज इट इज। ठीक है, एज इट इज विदाउट आइडियलाइजिंग और सेंटिमेंटैलिटी। ए रोमांटिसिज्म, बी रियलिज्म, सी मॉडर्निज्म एंड डी पोस्ट मॉडर्निज्म। इनमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इज बी, रियलिज्म। ठीक है, दिस मूवमेंट इमर्ज्ड इन द 19th century, रिजेक्टिंग द रोमांटिसाइज्ड व्यू ऑफ लाइफ इन फेवर ऑफ एक्यूरेट representation. Now, if you have read the novels of Charles Dickens, George Eliot, आपको पता है ये बहुत ही आसान सा सवाल है। उसके बाद द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, अ ग्रुप ऑफ विक्टोरियन आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स, वाज इंस्पायर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के बारे में बात हो रही है। नाउ टेल मी ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन विच वर्क इज कंसिडर्ड अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आइडियल्स ऑफ द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड एंड विच मेंबर ऑफ द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वाज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मेंबर और द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दिस ग्रुप। ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए अगर आपको पता है तो। लेट्स सी हाउ मच यू नो। ए है क्लासिकल माइथोलॉजी, B is medieval art and literature, C the industrial revolution and D the French revolution। कौन सा इनमें से? The correct answer is medieval art and literature। ठीक है, the pre-Raphaelites rejected the academic art of their time, seeking inspiration from earlier periods। Now उसके बाद एक और tricky वाला आ गया बहुत ही। ठीक है, which literary school emphasizes the power of the unconscious mind and explored dream imagery। Now ये काफी important है। A surrealism, B naturalism, C victorianism and D neoclassicism। कौन सा होगा इसमें से? पावर ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड एंड एक्सप्लोर ड्रीम इमेजरी। द करेक्ट आंसर इज सरियलिज्म, ए। दिस मूवमेंट इमर्ज्ड इन द early 20th century। ठीक है, it was also influenced by the theories of Sigmund Freud। Now one more question is the angry young men। ठीक है, this is the next question है ये। The angry young men, a group of British writers in the 1950s, were known for their critique of which of the following? ठीक है, A monarchy, B the establishment, C the working class and D the aristocracy। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लिटरेरी स्कूल है। ठीक है, वी ऑल नो द मेंबर्स। ठीक है, हु वर द मेंबर्स? जॉन ऑसबॉर्न, राइट, उनमें से एक थे। व्हाट इज द आंसर? इसका क्या आंसर है? The answer is the establishment। ठीक है, the angry young men challenged the social and political norms of their time, expressing disillusionment with the status quo। ठीक है, now one more bonus question I'll give you। ठीक है, which literary movement emphasized reason, order and harmony, valuing classical forms and themes? ये तो बहुत ही आसान सा है। ठीक है, A romanticism, B modernism, C victorianism and D neoclassicism। कौन सा होगा इसमें से? ये तो देख के ही बता देना चाहिए, it's D neoclassicism। ठीक है, this movement dominated the 18th century, drawing inspiration from ancient Greek and Roman models। ठीक है, now अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, if you have enjoyed the video, please like and subscribe our channel so that our channel can grow and reach people like you, and definitely hit the subscribe button and also press the bell icon so that whenever we upload a new video आपको notification मिल जाए। And remember that we are starting a new batch on the 15th of July। For enquiries or for enrollment, just call or WhatsApp us on this number 7678160296। ठीक है।